So we have few people here today. So before we begin, I would like to keep the floor open for questions. If anybody has any questions from the last uh, week or previous week discussion that we had, so let's have some question, and then we'll start with the session. Okay. So if you have any question, you can type it in the chat box, or you can unmute yourself and also ask. Okay. So it seems that there are not many questions. Okay. Fine. Then if you don't have any question, then I will ask you some questions and you can type the answer in the chat box. Okay. Yeah. So let's see who can answer the quickest. And based on whatever we have discussed in the previous sessions and the basic knowledge of Bhagavad Gita. Okay. So the first question which I have for all of you is, God is a person, true or false? You have to type in the chat box the correct answer. God is a person, true or false? I would request everyone to participate, whatever they know. Okay. Yeah, you can type in the chat box. No need to unmute and speak. You can type in the chat box. Okay, so Nilesh says true. Navendu says true. Okay. So Vivekanand Prabhu, you are saying it's false. Okay. So can you explain, why do you feel that God is not a person? Prabhuji, from my point of view, God is not a person because God having a superpower. It's a kind of power capability that is beyond human capacity. So to define God as a person, I think it would not be justifiable, because he cannot be defined within certain boundaries. That is how my perception about God is. Okay. So you're thinking that God, when I'm saying person, you are feeling that I'm talking about a person of this world, right? Like we are person, so God is also a person. Yeah. Yeah, but person means व्यक्तित्व, मतलब जिसका एक व्यक्ति या व्यक्तित्व है, ठीक है? अच्छा. वो व्यक्ति या व्यक्तित्व जो है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो साधारण है असाधारण है, ठीक है? वो एक अलग बात है, लेकिन व्यक्तित्व है कि नहीं, मतलब, या फिर तो क्या है? भगवान एक लाइट है आपके हिसाब से? व्हाट डू यू थिंक गॉड इज लाइक, हाउ डू यू कनेक्ट टू गॉड? तो आपने घर में गोपाल जी रखा है, तो गोपाल जी भगवान नहीं है क्या? मतलब गोपाल जी इज अ पर्सन और नॉट? व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ पर्सन? बिकॉज गोपाल जी लाइक्स टू ईट लड्डू और मक्खन मिश्री, and he wears he has the special liking, he likes more punk. So is he a person or is he not? I mean, when he took incarnation in a human body, then definitely we can define him as a person. But under certain incarnation, his quality looks like a person. But overall perspective, as a bigger picture, we say, then I mean, my perception is we cannot confine him as a person. Like Laddu Gopal you are giving example, yes, because he came in a human body as a Laddu Gopal,
we can say in a particular body when he came in this uh, world, in this Prithvi Lok, yes, we can say like him as a person. But if we see a bigger perspective, as a God, yes, he's beyond that. That is my understanding, but you may correct me, and you may just uh, make me make understanding my understanding correct if I'm not able to explain it correctly. So basically, what I wanted to explain to you that कि जो व्यक्तित्व है, जी जी व्यक्तित्व जी जो है, प्रभु ठीक है, हेलो प्रभु, आई एम नॉट एबल टू हियर. क्या इधर क्या बैकग्राउंड नॉइज, you can mute yourself. ओके. या सो अगर आपके बैकग्राउंड नॉइज तो आप म्यूट कर लीजिए. तो या व्हाट आई वाज सेइंग इज कि पर्सन मतलब बेसिकली जैसे हम एक व्यक्ति है, हमारे फादर एक व्यक्ति है, हमारे ग्रैंडफादर भी एक व्यक्ति है, राइट. तो वैसे ही इट्स भगवान भी एक व्यक्ति है, बट ही इज नॉट अ व्यक्ति ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. ओके ओके प्रभु. तो जो भगवान है, तो भगवान जो व्यक्ति है वो एक असाधारण व्यक्ति है. जी जी प्रभु. तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है कि ना भगवान जो है कि वो साधारण साधारण व्यक्ति नहीं है. जी प्रभु. आर यू क्लियर नाउ? तो भगवान जो है ही इज नॉट अ व्यक्ति लाइक अस ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड. ही डजंट हैव अ बॉडी लाइक अस. यस प्रभु. So anybody else has any question apart from this? Okay, I'll ask the next question then. So the next question which I have is okay, please explain once again, बोल रहे हैं नीलेश. Okay, ठीक है. Okay. So God is a person. Now, like since we all are persons, one second.
I'm facing some problem with this Zoom. 1 second. Yes, Prabhu. Actually, your sound is getting Yeah, muted. just give me 1 second. I'll just relog in. Radhir, you are there, na? Yeah, I'll relog in. You'll have to make me host again, I think. Just give me 1 second. Hare Krishna. Can you hear me now? Yes, Prabhuji. Okay. Okay. Sorry for the interruption. Yes. So we were discussing, about whether God is a person or not. So yes, God is a person.
Why? How we can understand that? By different examples. Like, I am a person, my father is a person, my grandfather is a person. Similarly, God is also, a person. Why? Because man is made in the image of God. We are coming from God, not other way around, right? So if we are coming from God, then we need to understand this thing, that man is made in the image of God, the Bible says, right? तो हम लोग इस पर्टिकुलर आकार में है क्योंकि भगवान का ये सेम आकार है. डिफरेंस क्या है कि इस वर्ल्ड में सब कुछ परवर्टेड है, इन द सेंस कि ना सब कुछ लो ग्रेड का है, लो कैटेगरी का है. तो जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो है वो सब कुछ चिंतामणि दिव्य है, वैसे ही यहाँ पे वो नहीं है. बेसिकली वहां पे नहीं है, इन द सेंस कि हम लोग का जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ स्टूल, बोन्स, ब्लड, यूरिन एटसेट्रा. भगवान का जो बॉडी है वो दिव्य है. भगवान की बॉडी में कोई ब्लड या ये चीजें नहीं है. इट्स मेड ऑफ सच्चिदानंद. इट्स अ दिव्य बॉडी. बट ही इज ऑल्सो अ पर्सन, एंड फ्रॉम हिज बॉडी इज कमिंग infinite amount of light that is illuminating the entire spiritual world. Like material world में illumination करने के लिए we need sun and moon, but spiritual world में भगवद गीता में चैप्टर 8 में ऐसा बता रहे हैं. आई थिंक चैप्टर 8 में है शायद वो, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम. न तद भाष्यते सूर्यो मतलब वो वर्ल्ड में, वो दिव्य, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में न तद भाष्यते सूर्य, वहां सूर्य नहीं है. न शशांको, शशांक मीन्स मून, मून का एक नाम है शशांक. किसी का नाम होता है शशांक, शशांक मतलब चंद्रमा. वहां शशांक भी नहीं है. नत गत्वा यद गत्वा न निवर्तन्ते, देयर इज नो सन, मून, फायर और इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर इल्यूमिनेशन देयर. In that place, nat gatva न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम. When one who reaches that supreme abode, no one comes back from there. So is it clear now? Vivekanand, Nilesh Prabhu, is it clear now? Nilesh, are you clear with it? What I'm trying to explain? That, like personality of Godhead, it's called supreme personality of Godhead. भगवान एक व्यक्ति, भगवान के 3 features है. Person, then is light, Brahma Jyoti, that is pervading everywhere, and then Paramatma, the localized feature. Just like sun and sunshine, I explained last time. जब रूम में धूप आता है तो हम बोलते हैं कि धूप आ गया रूम में, राइट? तो वही धूप आ गया रूम में. तो एक्चुअली हम लोग ऐसा बोलते हैं कि सूरज आ गया रूम में, बट एक्चुअली क्या है, धूप आया रूम में, सनशाइन आया है. बट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सनशाइन एंड द सन, एंड देयर इज आल्सो डिफरेंस. ठीक है, सनशाइन भी सन ही है, लेकिन एक डिफरेंस भी है उसमें. दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. Okay, so my next question is, we are having a quiz, those who have joined now. So whatever we discussed, you are answering in the chat box. So my next question is, we discussed that in the previous times, the soul is equal to the super soul, true or false? The soul is equal to the super soul, true or false?
False. Okay. So I explained last time that God and we, कभी कभी लगता है कि सोल एंड सुपर सोल इक्वल है या नहीं है, राइट? तो लाइक यू नो इफ यू गो टू ओशन, ओशन का एक ड्रॉप भी सॉल्टी है और पूरा ओशन भी सॉल्टी है, राइट? सिमिलरली, like you know, if you see this uh, ocean, but the quantity of the ocean, the magnitude of the ocean is different from the magnitude of you know the drop, right? So quality mein both are same. So similarly, the soul and the super soul are same in quality but different in quantity. क्वालिटी में सेम है, बोथ आर सॉल्टी, बट क्वांटिटी में डिफरेंट है. ड्रॉप इतना छोटा है, ओशन इतना बड़ा है, ठीक है? सिमिलरली दैट इज नाउ यू नो हाउ गॉड एंड the soul is connected. Okay, I hope that is clear to you. So same in quality but different in quantity. We are same in to God in quality but different in quantity. Same in quality, how we both are सच्चिदानंद विकृत, सच्चिदानंद, भगवान भी सच्चिदानंद, हम भी सच्चिदानंद, लेकिन भगवान is infinite and we are infinitesimal. Okay, so hope that is clear to everyone. So next question is, where is the soul situated? Soul body में कहाँ पे situated होता है? Where is the soul situated in the body? Near heart, yes, correct. Region of the heart. It's not near heart, it's the region, yeah, region of the heart. Yes, soul is present, not we can say in the heart, in the region of the heart, in this area. ठीक है, ऐसा नहीं कि हार्ट में है. I explained last time that heart transplant हो गया तो ऐसा नहीं कि सोल भी ट्रांसप्लांट हो जाएगी. सोल विल सिट देयर ओनली. इट्स लाइक अ चेयर. ठीक है, आप चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, तो चेयर अगर चेंज कर देगा तो आप चेंज नहीं होने वाले, राइट? टुडे यू आर सिटिंग इन, यू ऑलवेज सिट इन वन चेयर. इफ आई चेंज योर चेयर, heart is like the chair where the soul is sitting. If I change the chair, the this thing, the you know, the soul will sit on the new chair. तो हार्ट चेंज हो जाएगा तो उसमें न्यू चेयर में बैठेंगे. बट एवरीवेयर जो आप बोल रहे हैं विवेकानंद प्रभु, एवरीवेयर बेसिकली सोल का सिम्टम होता है कॉन्शियसनेस. नाउ आई एम एबल टू स्पीक, आई एम कॉन्शियस. व्हाई? बिकॉज सोल इज देयर इन माय बॉडी, सो आई एम एबल टू स्पीक एंड देयर इज कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस इज परवेडिंग इन द एंटायर बॉडी. अगर मुझे यहाँ पे कोई पिंच करेगा तो मुझे फील होगा. सोल इज हियर, बट यहाँ पे भी पिंच करेगा तो फील होगा. ठीक है, यहाँ पे भी कोई ऐसे करेगा तो मुझे फील होगा, पैर में भी करेगा तो फील होगा. बिकॉज द सिम्टम कॉन्शियसनेस इज प्रिवेडिंग in the entire body because of the presence of the soul. The moment the soul leaves the body, there is no symptom of consciousness. So consciousness is the symptom of the soul by which we can, you know,
Okay. So now, okay. Okay. So you understood the question. Okay. If anybody has any questions, you can stop and ask also, no problem. So the next question that I have is the super soul है परमात्मा, ठीक है? It resides in which मतलब कौन से creatures में reside करता है? कौन से creatures में reside करता है? सुपर सोल जो है परमात्मा इस दुनिया में कौन से क्रीचर्स में रिसाइड करता है? कौन से क्रीचर्स में? कहाँ नहीं पूछ रहा हूँ, वेयर नहीं, रिसाइड्स इन विच क्रीचर्स? इन ऑल, यस करेक्ट, इन ऑल क्रीचर्स. तो परमात्मा जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करते. Okay, anybody has any question? So we'll start, we'll sing one bhajan now and then. So we'll sing today this bhajan, Jai Radha Madhav. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिधरधारी. यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी
गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन जग जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जोगीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके,
So today we'll try to read something from Krishna book. We don't have many people who have joined. So we'll try to read something from Srimad Bhagavatam and then from Krishna book. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye. Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavate Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtaki. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So we are reading from this first canto, 9th chapter, 35th verse. This is the passing away of Bhishma Dev. तो ये एक भगवद गीता का पार्ट आ रहा है यहाँ पे। In obedience to the command of his friend, Lord Krishna entered the arena of the battlefield of Kurukshetra between the soldiers of Arjuna and Duryodhana. And while there, he shortened the lifespans of the opposite party by his merciful glance. This was done simply by looking at the enemy. Let my mind be fixed upon that Krishna. So, in obedience to the command of his friend, again I repeat, Lord Shri Krishna entered the arena of the battlefield of Kurukshetra between the soldiers of Arjuna and Duryodhana. And while there, he shortened the lifespans of the opposite party by his merciful glance. This was done simply by looking at the enemy. Let my mind be fixed upon that Krishna. So here it is being explained that in Bhagavad Gita, Arjuna ordered the infallible Lord Krishna to place his chariot between the phalanxes of the soldiers. जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, युद्ध के पहले अर्जुन ने बोला कि मुझे आप दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाओ। कृष्ण को बोला सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मे च्युतः, मतलब दोनों सेना के बीच के मध्य में आप मेरे रथ को स्थापन करो। कृष्ण को ऐसा बोला भगवान ने। He asked him to stay there until he had finished observing the enemies he had to face in the battle. When the Lord was so asked, he at once did so, just like an order carrier. And the Lord pointed out all the important men on the opposite side, saying, here is Bhishma, here is Drona, and so on. The Lord, being the supreme living being, is never the order supplier or order carrier of anyone, whoever he may be. But out of his causeless mercy and affection for his pure devotees, sometimes he carries out the order of the devotee like an awaiting servant. By executing the order of a devotee, the Lord becomes pleased, as a father is pleased to carry out the order of his small child. This is possible only out of pure transcendental love between the Lord and his devotees, and Bhishma Dev was quite aware of this fact. He therefore addressed the Lord as the friend of Arjuna. So, भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान को जब बोला रथ को स्थापन करने के लिए,
सो तो भगवान तो देखा, जब वहां पे बीच में आए तो देखा कि उधर कौन है, उस तरफ भीष्म, द्रोण और बहुत सारे भाई बहन बंधु सब वहां पे है। अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने बोला कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे युद्ध करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि जो राज्य मिलेगा दैट विल बी ब्लड स्टेन, ब्लड स्टेन, इन सबके खून से रंगा होगा, इन सबको मार दूंगा मैं, और वो भी मेरे पितामह और गुरुदेव को ही मारना पड़ेगा मेरे को ये लेने के लिए। तो ऐसा राज्य करके क्या फायदा, मैं संन्यास लेके मैं जंगल में चला जाता हूँ, आई डोंट वांट दिस किंगडम। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने के लिए कि हाँ, अर्जुन को भगवान क्या बोल रहे थे कि तुम जो है युद्ध युद्ध ये आगे बता रहे हैं कि the Lord diminished the duration of life of the opposite party by his merciful plans. It is said that all the fighters who assembled on the battlefield of Kurukshetra attained salvation by personally seeing the Lord at the time of death. Therefore, his diminishing the duration of life of Arjuna's enemy does not mean that he was partial to the cause of Arjuna. Actually, he was merciful to the opposite party because they would not have attained salvation by dying at home in the ordinary course of life. Here was a chance to see the Lord at the time of death and thus attain salvation from material life. Therefore, the Lord is all good, and whatever he does is for everyone's good. Apparently, it was for the victory of Arjuna, his intimate friend, but factually, it was for the good of Arjuna's enemies. Such are the transcendental activities of the Lord, and whoever understands this also gets salvation after quitting this material body. The Lord does no wrong in any circumstance because he is absolute, all good at all times. ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं इंपॉर्टेंट पार्ट कि भगवान ने बोला अर्जुन को कि यू आर लुकिंग एट एवरीथिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ मतलब क्या है, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की तरह, एनिमल्स का सोचना क्या है, आहार निद्रा भय मैथुन। सुबह से जब उठते हैं तो ये सोचते हैं खाना कहाँ है, कैसे प्रोटेक्शन रखना है, कोई शिकारी मेरे को पकड़ लेगा कि नहीं। एक चिड़िया यही सब भी सोचती है अपने और अपने बच्चों के बारे में, कि कहाँ से खाना मिलेगा, कहाँ से पानी मिलेगा, और कैसे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, और रात हो गया तो जल्दी सोना है। और एलिफेंट, एक मेल एलिफेंट हमेशा शी एलिफेंट को ढूंढता रहता है फॉर मीटिंग और फॉर एंजॉयमेंट, एंड his life is also circled around food and sleeping only. So now human beings also need to do all these 4 activities, no doubt in that, it's required, but human beings have a higher purpose also, they have a higher intelligence by which they can also discriminate and understand the goal of the human form of life. तो ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ को समझने का जो प्रेरोगेटिव है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो सिर्फ मतलब ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में ही है, पॉसिबल है। एक गाय के लिए, एक मनुष्य, एक गाय के लिए या एक बिल्ली के लिए या एक पेड़ के लिए पॉसिबल नहीं है। अभी जो हम भगवत गीता डिस्कशन कर रहे हैं, भागवतम डिस्कशन कर रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर टू बी डिस्कस्ड बाय एन एनिमल और अ पर्सन इन द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लाइफ। इट इज पॉसिबल ओनली फॉर अ ह्यूमन बीइंग। ये चीज हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे ये बता रहे कि वी हैव टू ग्राइज द बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ। अर्जुन को ये बोला कि मैंने इन सब रथियों महारथियों को ऑलरेडी मार दिया है। ठीक है, तुम सिर्फ एक निमित्त हो, यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट इन वेयर यू विल बी किलिंग ऑल दिस पीपल। ठीक है, एंड दीज पीपल, भगवान जो करते हैं, कभी कभी हमको लगता है कि ना हम ये आदमी सही है या गलत है, ये करता है तो सही है, वो करता है तो गलत है, लेकिन भगवान जो भी करता है हमेशा सही होता है। ठीक है, कभी कभी लोगों को लगता है भगवान ने मक्खन चोरी किया, तो भगवान ने जो मक्खन चोरी किया वो भगवान का लीला है, जिससे he gave pleasure to all the ब्रजवासीज ऑफ वृंदावन, राइट। ठीक है, कभी कभी नित्यांगी she goes and she goes to the fridge and she will or go to the fridge and take out some fruit or something like that which she likes. हम उसको नहीं देते, कभी कभी बोलते कि नहीं बेटा ये मत खाओ, ज्यादा खाने से it will not be good for your health. But if she likes that then she will grow, and especially she likes grapes a lot. अंगूर उसको ज्यादा सूट नहीं करता खाने से, but she will go and take it sometime. So that is not, we cannot say that is thievery. That is like this बाल लीला है, बच्चों का बाल लीला है।
तो वैसे भगवान ने ये लीला किया इसलिए फॉर गिविंग प्लेजर टू द कावर्ड गर्ल्स ऑफ वृंदावन, गिविंग प्लेजर टू द एल्डरली गोपीज वृंदावन। वो लोग खुद भगवान को प्रार्थना करते थे कि भगवान आओ और हमारा मक्खन चुराओ, और भगवान मक्खन चोरी की लीला करते थे। ये लीला करते हैं क्यों? क्योंकि इसमें like there is fun element involved and there is reciprocation between the Lord and his devotee. That is important to understand. ठीक है? So here was a, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दिखा रहा है कि भगवान जो लीला कर रहे हैं, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा है, उसमें जो कोई भी हानि में नहीं है। जो युद्ध जीत रहा है वो भी नहीं, और जो युद्ध में मर रहा है वो भी नहीं। युद्ध में जीत रहा है उनको राज्य मिल रहा है, उनको भगवान का कृपा मिल रहा है, और जो युद्ध में मर रहे हैं उन सबको मोक्ष मिल रहा है, मुक्ति मिल रहा है। कैसे? क्योंकि वो भगवान के सामने मर रहे हैं, भगवान के सानिध्य में उनकी मृत्यु हो रही है। सो मृत्यु में भी भगवान उनको ये दे रहे हैं। सो he was partial to the cause of Arjuna. He was merciful to the opposite party because they would not have attained salvation by dying at home in the ordinary course of life. So he was a chance to see the Lord at the time of death and thus attain salvation from material life. So therefore the Lord is all good and whatever he does is for everyone's good. भगवान जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, और भगवान हमेशा ही कंप्लीट और गुड है। और भगवान की विक्ट्री के लिए किया उन्होंने। बट ऐसा लगता है, ऐसा किसी किसी को लगता है कि भगवान पार्शियल है, भगवान सिर्फ ना अपने भक्तों के बारे में देख रहे हैं। बट जस्ट लाइक सूरज डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कहाँ पे राइज करना है, इधर धूप देना है इधर धूप नहीं देना है, ऐसा नहीं है, हर जगह पे धूप देता है सूरज। वैसे भगवान भी थिंग्स ऑफ गुड ऑफ एवरीवन। अर्जुन का विक्ट्री था और उनके एनिमीज का भी गुड था, बिकॉज दे वर गेटिंग लिबरेशन। लिबरेशन इज नॉट लाइक सम टॉम डिक हैरी थिंग कि हम कोई घड़ी हम बाजार से खरीद के ले आएंगे, या इट इज समथिंग, इट इज प्राइसलेस। लिबरेशन के लिए संत लोग हजारों साल, फॉर मेनी लाइफ टाइम दे प्रिपेयर। That's the transcendental activities of the Lord, and whoever understand this also gets salvation after putting this material body. The laws does not no wrong in any circumstance because absolute all good at all times. ठीक है, ये समझना जरूरी है। This is very important to understand. And second thing it is saying here that भगवान जो है अपने भक्तों के लिए कभी-कभी he steps up position below that, he becomes subservient to them. जैसे अगर आप देखेंगे कुछ फोटोज ऐसे हैं जिसमें भगवान नंद महाराज के स्लीपर्स अपने सर पे कैरी कर रहे हैं, यशोदा माँ इनको कुछ ऑर्डर बोली, ऑर्डर कैरी आउट कर रहे हैं। he becomes the order carrier of his devotees. Why? Because he is conquered by their love. भगवान को कोई ऑर्डर कैरियर नहीं बना सकता, लेकिन वो ऑर्डर कैरियर बन जाते हैं कैसे? भगवान भक्तों के प्रेम में आके। तो इज कैरिंग द वुडन स्लीपर्स ऑफ नंद महाराज ऑन हिज हेड, और उन्होंने भगवान के बहुत सारे ऑपुलेंसेस है। he is like he is all powerful, he is all famous, he is one is fame, all powerful, all famous, he is all wealthy, wealth, fame, strength, he is all beautiful, he is all knowledgeable. भगवान के पास ये 5 ऑपुलेंसेस है, और छठवां ऑपुलेंस है सुप्रीमली रिनांशिएंट। भगवान के पास ये सब कंप्लीट वे में है। कैसे कंप्लीट है? कि भगवान का जो नॉलेज है, भगवान ने जो भगवत गीता बोला, ऐसा नहीं कि भगवत गीता अर्जुन को बोलना है अभी चलो पूरा रिवीजन करके, अभी रिवीजन करना है अर्जुन, रुको 5 मिनट मुझे रिवाइज करना होगा या मुझे रेफर करना होगा। He spoke spontaneously and completed the entire Bhagavad Gita in 1 hour or even less than that. ठीक है, कंप्लीट नॉलेज उन्होंने दिया अर्जुन को, और उन्होंने बताया भगवत गीता में कि टुडे आई एम गिविंग यू दैट नॉलेज by knowing which there is nothing further to be known. कंप्लीट नॉलेज उन्होंने भगवत गीता का अर्जुन को दिया within an hour. अर्जुन वैसा स्टूडेंट भी था तो एक्सेप्ट करके डाइजेस्ट कर सकता था, हमारे लिए शायद वो पॉसिबल ना हो। ठीक है, भगवान इज ऑल पावरफुल। ठीक है, उन्होंने 7 साल की आयु में एक छोटी उंगली में अपना गोवर्धन पर्वत धारण किया भगवान ने। करेक्ट? हम लोग इस छोटी उंगली पे लाइक इट्स डिफिकल्ट टू इवन लिफ्ट दिस कुशन, वो भी गिर जाएगा। भगवान ने 22 किलोमीटर से भी बड़ा पर्वत था, 22 किलोमीटर तो उसका रेडियस अभी है, और वो पर्वत धीरे धीरे छीन होते जा रहा है गोवर्धन पर्वत, उसको उन्होंने अपने दाहिनी उंगली पे उठाया था। ये सब प्रूव करता है कि भगवान भी जो पर्सन है इज अ ट्रांसेंडेंटल पर्सन, ही इज नॉट अ पर्सन ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। देन ब्यूटी के बारे में आते हैं, तो भगवान का ब्यूटी कैसा है? भगवान का ब्यूटी को डिस्क्राइब करता है कि कामदेव भी फेंट हो जाते हैं भगवान को ब्यूटी को देख। कंदर्प thousands and thousands of cupids, कामदेव बोलते सबसे सुंदर है और सुंदरता के देवता है, वो भी फेंट हो जाते हैं भगवान का सुंदरता देख। That is so much beauty
the Lord has. In fact, एक डिस्क्रिप्शन आता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कि एक बार भगवान खुद शीशे में अपने आप को देखे और अपने अपना ब्यूटी को देख के देखते ही रह गए कि भगवान इतने सुंदर है। और गोपिया और राधा रानी ऐसे बोलते हैं कि ना भगवान के जब एक पार्ट को भगवान के चेहरे को देखते हैं, आंखों को देखते हैं, तो वो इतना सुंदर है, हम वही देखते रह जाते हैं। सो ही इज सुप्रीमली ब्यूटीफुल, फेमस। जैसे मतलब भगवान के जो हर लीला जो है भगवान का, भगवान इज ऑल फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। तो भगवान को लोग मक्खन चोर बोलते हैं, रन छोड़ बोलते हैं। जो भी एक्टिविटी भगवान करते हैं उससे वो फेमस हो जाते हैं। So it's all, everyone knows Krishna. It's all famous. All famous बताया मैंने आपको, all beautiful बताया, all knowledgeable बताया, all strength बताया, ठीक है। So ये 5 opulences हुए। और 5th opulences all renunciant कैसे हुआ? तो किसी के पास अगर इतनी सारी चीजें होंगी, नॉलेज होगा, फेम होगा, पावर होगा, स्ट्रेंथ होगा, ब्यूटी होगा, ये 5 चीजें अगर होगी, वो कभी मतलब रिनाउंसिएंट कैसे हो सकता है? वो तो बहुत प्राउड ही होगा ना, मतलब अरे मेरे पास इतना सारा चीजें हैं, तो अपने आप को बहुत बड़ा समझेगा। अगर हमारे पास इतने पास चीजें आएंगी, आपका पता नहीं, अगर मेरे पास इतना चीजें आएगी तो डेफिनेटली आई विल बिकम वेरी प्राउड एंड एरोगेंट। थैंक गॉड भगवान ने इतना चीजें नहीं दिया। तो अगर इतनी चीजें आने से प्राउड एंड एरोगेंट होना चाहिए, लेकिन भगवान को सुप्रीम रिनाउंसिएशन भी बोला गया है। कैसे? हाउ ही हैड द ऑप्टिमम्स ऑफ रिनाउंसिएशन। लेट्स सी एन एग्जांपल। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि भगवान अपने डिवोटी का ऑर्डर कैरियर भी है, और अर्जुन के लिए भगवान रथी बने थे, सारथी बने थे। सारथी, रथी होता है जो रथ पे बैठता है, और सारथी जो रथ चलाता है, चैरियट ड्राइवर। तो चैरियट ड्राइवर, ड्राइवर अभी भी इंडिया में अगर कोई ड्राइवर का काम करता है तो उसको सोशली थोड़ा सा लो समझा जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी चैरियट ड्राइवर जो था, इट इज नॉट कंसिडर्ड अ वेरी वेरी हाईली एस्टीम्ड पोजिशन। शूद्रास यूज्ड टू वर्क एज अ चैरियट ड्राइवर that point of time. But Krishna, for Arjun, he took up this position of a chariot driver. यानी मुझे chariot driver लेना है, ठीक है। अर्जुन ने वो जब पूछा था कि नारायण ने नारायण से लेना, तो बोला नारायण लेंगे, नारायण लूंगा मैं। और उसने बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा कुछ, तो बोला मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। और सारथी का पोजीशन कैसा रहता है? आप सोचिए कि कभी कभी क्या होता है कि हम जब ड्राइव में जा रहे होते हैं, ठीक है, और बहुत ट्रैफिक होता है, तो हम थोड़ा जोर से बोलते हैं, तो ड्राइवर बहुत जोर से बोलना पड़ता है, तब ड्राइवर सुनता है, ठीक है। और हमारा जो गाड़ी रहता है वो जनरली क्लोज रहता है, ठीक है। एसी चला के हम चारों तरफ बंद कर लेते हैं तो ड्राइवर सुन पाता है, ठीक है। लेकिन रथ कैसा होता था महाभारत के टाइम में? रथ जो होता था वो खुला रहता था, रथ, इट इज ओपन टू एयर, राइट। और वहां पे हाथी, घोड़े, और कितना साउंड है उस बैटलफील्ड में। तो रथी का, सारथी को वर्बली कम्युनिकेट करना इज नॉट पॉसिबल। बहुत मुश्किल है कि कुछ अर्जुन कुछ बोलेंगे और कृष्ण सुन पाएंगे। तो अर्जुन कृष्ण को कैसे कम्युनिकेट करेंगे? रथी सारथी को कैसे कम्युनिकेट करता था? तो कम्युनिकेट करते थे अपने पैरों से। अगर पैर से सारथी ऐसे बैठता है और पीछे रथी यहाँ पे है, तो रथी अपने पैर से अगर बीच में, साइड में, लेफ्ट में और राइट में लात मारता है। अगर राइट में लात मारेगा तो रथ को राइट में लेके जाना है, ठीक है। हम ड्राइवर को बताते हैं ना कहाँ जाना है, तो वैसे ही रथी बताता है कि किधर जाना है। तो अगर राइट में लात मारेगा तो राइट जाएगा, लेफ्ट में लात मारेगा तो लेफ्ट जाएगा, और बीच में लात मारेगा तो सीधा जाएगा। तो भगवान ने, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड भगवान ने ये पोजीशन एक्सेप्ट किया अपने भक्त के लिए, कि वो अर्जुन का लात भी खा रहे थे युद्ध भूमि में। अगर राइट मारा तो राइट चलेंगे, लेफ्ट बोला तो लेफ्ट जाएंगे, बीच में मारा तो बीच में चलेंगे। इनफैक्ट like driver is the servant in one way, and he's like carrying out the order of the person sitting on the chariot. तो ये भगवान का सुप्रीम रिनाउंसिएंट पोजीशन को दिखाता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है तो ये दिखाता है कि भगवान सुप्रीमली रिनाउंसिएंट है, ठीक है। सो इफ यह सुनने के बाद आपको लगता है कि यस दिस इज रियली समथिंग न्यू और वैल्यूएबल दैट यू लर्न टुडे, देन प्लीज टाइप वैल्यूएबल इन द चैट बॉक्स कि आपको ये वैल्यूएबल लगा भगवान का ये ऑपुलेंस जान के। Thank you. So yes, now this is what the crux of this verse is.
ये समझना बहुत जरूरी है हमको कि भगवान ऑल गुड है और भगवान कैसे पोजीशन एक्सेप्ट करते हैं. We'll see one more words and then we'll move forward. So यहाँ पे बोल रहे हैं when Arjuna was seemingly polluted by ignorance upon observing the soldiers and commanders before him on the battlefield, the Lord eradicated his ignorance by delivering transcendental knowledge. May his lotus feet always remain the object of my attraction. The kings and the commanders were to stand in front of the fighting soldiers. That was a system of actual fighting. The kings and commanders were not so-called presidents or ministers of defense as they are today. They would not stay home while the poor soldiers or mercenaries were fighting face to face. This may be the regulation of modern democracy, but when actual monarchy was prevailing, the monarchs were not cowards elected without the consultation of qualification. As it was evident from the battlefield of Kurukshetra, all the executive heads of both parties, like Drona, Bhishma, Arjuna, and Duryodhan, were not sleeping. All of them were actually participating in the fighting, which was selected to be executed at a place away from the civil residential quarters. This means that the innocent citizens were immune from all effects of fighting between the rival royal parties. The citizens had no business in seeing what was going to happen during such fighting. They were to pay 1/4 of their income to the ruler, but whether he be Arjuna or Duryodhan. तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि आज के जो टीचर ये है सारथी, आज के जो लीडर्स है, दे आर नॉट फाइटिंग द बैटल फ्रॉम द फ्रंट. डेमोक्रेसी को शास्त्र में इतना सपोर्ट नहीं किया गया है. अभी जो डेमोक्रेसी सिस्टम है उनको लगता है बहुत अच्छा है, डेफिनेटली हैज सम एडवांटेजेस, पर शास्त्र में उसको इतना सपोर्ट नहीं किया गया. उसका एक रीजन ये है कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है डेमोक्रेसी में. एक्सप्लॉयटेशन इन द सेंस ऑफ एक्सेप्टिंग टैक्सेस एंड नॉट डिलीवरिंग. करप्शन तो है ही, लेकिन करप्शन नहीं होने से भी, करप्शन अगर नहीं होता है, करप्शन नहीं अगर नहीं भी होता है, तो आप देखिए कि जो ये है आपका क्या बोलते हैं, जो सोल्जर्स है, जो लीडर्स है, वो लोग कभी बैटल में फ्रंट पॉइंट में नहीं आते. राइट, फ्रंट पॉइंट में नहीं आते. क्यों नहीं आते फ्रंट पॉइंट में? बिकॉज दे आर गिविंग द कमांड फ्रॉम द बैक साइड. लेकिन पहले अगर आप देखो तो अर्जुन जो थे, दुर्योधन जो थे, वो लोग युद्ध में आगे आके युद्ध कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पीछे से कमांड दे रहे थे. ठीक है, और युद्ध कहाँ पे हो रहा था? युद्ध सिविलियंस को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था. अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, सिविलियंस आर गेटिंग डिस्टर्ब. दिस इज नॉनसेंस. सिविलियंस वर नॉट गेटिंग डिस्टर्ब. तो युद्ध हुआ था हस्तिनापुर में, युद्ध नहीं हुआ था, युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था. तो सोचिए ध्यान से, एवरीथिंग वाज वेरी वेल प्लान्ड एंड सिस्टमैटिकली डन. और उस टाइम जो युद्ध होता था उसमें न्यूक्लियर वेपन्स, अभी न्यूक्लियर वेपन सबको लगता है हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है. अर्जुन के पास अग्निअस्त्र तो था ही, अलग अलग अग्निअस्त्र तो थे ही उनके पास. वरुणास्त्र भी था, पानी का भी वेपन था. अभी पानी का वेपन सुना आपने किसी के पास? नहीं. तो साइंस इसको इन्वेंट कर सकता है शायद फ्यूचर में, डेफिनेटली. बट ये सोचना कि ना उस टाइम के लोग जो थे वो पिछड़े थे या इतना एडवांस नहीं थे, ये सच नहीं है. They were in fact more advanced than us. और आप देखो रामायण में भी ना, राम जी कैसे आए थे सीता मैया को लेकर? पुष्पक विमान से आए थे. राइट, एंड रामायण इज सम लैक्स ऑफ इयर्स अगो. ऐसा नहीं कि राइट ब्रदर्स ने फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया तो ही प्लेन आया. मे बी अभी इस टाइम, इस पर्टिकुलर एरा में उन्होंने इन्वेंट किया होगा, इस पर्टिकुलर सेंचुरी में या रिसेंट टाइम में उन्होंने इन्वेंट किया होगा. बट दिस टेक्नोलॉजी वाज ऑलवेज देयर. पुष्पक विमान and this technology of the weapons was always there. So ये पॉइंट यहाँ पे is particularly being highlighted. 2 points. Why monarchy जो है was prevailing, what was happening at that point of time. So taxes were there. वहाँ पे भी taxing होता था. 1/4 taxes they had to give, but there was no exploitation and the rulers were fair to the civilian people. अभी टैक्स भी ले लिया, सिविलियन मर रहे हैं, तो पता नहीं, ऐसा नहीं था. That is very important to understand. And all the commanders of the parties on the battlefield of Kurukshetra were standing face to face, and Arjuna saw them with great compassion and lamented that he was to kill his kinsman on the battlefield for the sake of empire.
He was not at all afraid of the giant military flanks spelunted by Duryodhan, but as a merciful devotee of the Lord, renunciation of worldly things was natural for him, and thus he decided not to fight for worldly possessions. But this was due to a poor fund of knowledge, and therefore it is said here that his intelligence became polluted. His intelligence could not be polluted at any time because he was a devotee and constant companion of the Lord. ध्यान से समझिए, पहले बोला कि उसका इंटेलिजेंस पोल्यूट हो गया था, फिर बोला his intelligence could not be polluted at any time because he was a devotee and a constant companion of the Lord, as is clear in the 4th chapter of the Bhagavad Gita. Apparently, Arjuna's intelligence became polluted because otherwise there would not have been a chance to deliver the teachings of the Bhagavad Gita for the good of all the polluted conditioned souls engaged in material bondage by the conception of the false material body. The Bhagavad Gita was delivered to the conditioned souls of the world to deliver them from the wrong conception of identifying the body with the soul and to re-establish the soul's eternal relation with the Supreme Lord. Atma-vidya, or transcendental knowledge of himself, was primarily spoken by the Lord for the benefit of all concerned in all parts of the universe. So, भक्त जो रहते भगवान के भक्त, अर्जुन जो था, he was a pure devotee of the Lord. He was associated with the Lord in the friendship. ठीक है? ऐसा नहीं था कि अर्जुन और कृष्ण जो थे, जो आपने हस्तिनापुर में देखा, सिर्फ वही था. They are eternally existing in the spiritual world. This relationship between Arjuna and Krishna is eternally existing in the spiritual world, and they are coming basically to do the pastimes. जैसे अगर आप ठीक से समझेंगे, अगर आप भागवत को ठीक से पढ़ेंगे, तो रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ये जो थे, they basically came to kind of they came as Jay Vijay actually came as them so that they could participate in in the Lord's mission to teach. तो कभी-कभी भगवान deluded हो भक्त deluded हो जाता है. अर्जुन ऐसा दिखाया कि अरे मुझे तो delusion हो रहा है. I am getting deluded by this identification with the body, by my guru and everything, so that the teachings of Bhagavad Gita could be delivered. He was playing the role so that Bhagavad Gita के teachings deliver हो. तो भगवान को सहाय करते हैं भगवान की लीला में भगवान के भक्त कभी भी deluded नहीं होते. But he played this role so that the message of Bhagavad Gita could be delivered to the people in this world. So this is what I wanted to share. So anybody wants to share anything? Okay. So we'll stop here. Anybody has any questions or comments, you can share, or we can stop now. I hope today's session was valuable for you. Sorry, I couldn't present very properly today, and a little tired, as well as there was some network issue in the beginning. So anybody wants to ask anything or share anything? Thank you very much. I request everyone to read Bhagavad Gita. Bhagavad Gita पढ़ेंगे ना तो आपके ये सारे questions के answer होंगे, and you keep participating in the sessions regularly. So thank you so much for your association on a Saturday evening. Thank you very much. We'll meet again next week, and we'll be having another session on Thursday morning at 7:30 a.m. We'll share the link in the group. 7:30 on Thursday morning. Thursday is 28th. Yes. Okay. Thank you very much. Srila Prabhupada ki Jai. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna.